Hi everyone, welcome to Success Series. This is your educator Shrishti, and today we are going to continue with your class 10 geography MCQs, the chapter being agriculture. ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस होने वाले हैं, आपकी बोर्ड एग्जामिनेशंस में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं. So for all those who are watching this, please complete and participate in the MCQ session for entirety. Please write down your answers in the comment section and then we will complete this lecture. Okay, before we move forward, I have a request to make to all of you all. Please follow our page on Facebook, Instagram, Twitter, and for all those who are watching us on YouTube right now, do not forget to subscribe to our channel if you have not as of yet. Also hit on the bell icon क्योंकि उससे आपको सारे notifications बहुत ही instantly मिल जाएंगे. And last but not the least, we have a lot of free content for the class 10 students. So this are going to be immensely beneficial for your board examinations. And yes, you heard it correct. It's all free of cost. Explanation notes are there, video lessons are there. There are MCQs for practices. You can download the free PDF of all of this by following the links in the description box. तो please description box में जो links है उनको follow कर लीजिए, वहाँ से PDFs को download कीजिए and then begin your board's preparation. You can also conduct free tests for yourself by visiting examsuccess.successseries.net, link of which is also provided in the description box. Apart from that, there are a lot of other free content. So please go, do not wait for anything. Hit on the description box button and then follow the links in order to have a full-fledged preparation. On that note, we will come to the first question for today. क्या है first question? How much of India's population is engaged in agricultural activities? Your options being 2/3, half, 1/3 or almost everyone. Time begins now. Everybody participate. It is an easy factual question. ज़्यादा कुछ डाउट्स नहीं होने चाहिए इसमें. कितनी पॉपुलेशन हमारी एग्रीकल्चरल एक्टिविटी में एंगेज्ड है? योर करेक्ट आंसर इज डेफिनेटली ऑप्शन ए. एग्रीकल्चर इज अ प्राइमरी सेक्टर एक्टिविटी. ओके, इट इज़ अ प्राइमरी एक्टिविटी. व्हाट आर सेकेंडरी एक्टिविटीज़? जो भी मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड है. एंड टर्शियरी एक्टिविटीज़ आर सर्विसेज. ओके, सो मोस्ट ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन इज एंगेज्ड इन एग्रीकल्चर विच इज़ अ प्रीडोमिनेंट एक्टिविटी इन Asia, especially India. Alright, so this is going to be your correct answer. Let's move to question 2. Over these years, cultivation methods have changed significantly depending upon the characteristics of types of crop, technological know-how, types of season or government intervention. Everybody, time has begun. Cultivation methods have been changed because of change in what? So what can you think to be the right answer here? Please tell me quickly. Yes, everyone. So the correct answer here is going to be option B, technological know-how. जैसे जैसे टेक्नोलॉजी एडवांस होगी वैसे वैसे आपके कल्टिवेशन मेथड्स भी एडवांस होते जाएंगे. If we use old and outdated technology, then you will be having primitive kind of agriculture. Okay, so that is why B will definitely be your correct answer. जिन्होंने भी correct दिया है very good. जिन्होंने नहीं दिया, it's time for you to revise and study. Please do not take it lightly. Try and ensure that आपको सारे के सारे questions correct आ रहे हैं इनमें से, because these are very basic questions that coincide with your chapter. Coming to question 3, farming has varied from subsistence to dash type. So what does farming vary from? Intensive, extensive, commercial or plantation? So go guys. Time has begun. Quickly write down in the comment section subsistence to what type. Farming के कितनी varieties हैं? So here if you are able to relate, A, B are also correct. D is also a type of farming. But यहाँ पे हम लोग C की बात करेंगे. क्यों? क्योंकि subsistence farming क्या होती है? जो अपने living के लिए की जाती है. इसमें ज़्यादा surplus नहीं होता है. The people only try to meet their ओन फूड नीड्स. जितनी ज़रूरत है खुद को, खुद की फैमिली को, उतना ही वो लोग कल्टिवेट कर पाते हैं. दैट इज सब्सिस्टेंस विच इंश्योर्स दैट दे आर एबल टू कंटिन्यू विद देयर लिविंग. बट वॉट इज कमर्शियल फार्मिंग? इन विच
you have a business type of a farming जहाँ पे बहुत large scale में सब कुछ किया जाता है and you have a lot of output as well as it is for commercial profits. Intensive, extensive is just a part of subsistence farming. So यहाँ पे commercial is your correct answer. Let's move to question 4. Agriculture is practiced on small patches of land with the help of primitive tools like hoe, dhow and digging sticks and family community labor. What type of agriculture is this? किसी एक agriculture को हमने describe किया है, कुछ characteristics उसके बताए हैं. You have to identify कि कौन सी agriculture की बात की जा रही है. Come to the options: intensive, primitive subsistence, extensive or plantation. Everyone, time has begun. Agriculture is practiced on small patches of land with the help of primitive tools. So यहाँ पे primitive technology की बात की जा रही है and hence your correct answer will definitely be primitive subsistence agriculture. Agriculture is practiced on small patches, help of primitive tools. इसीलिए primitive is the meaning for olden, when you're using old kind of methods and when you're doing it for a living, जहाँ पे आप commercial profits नहीं देख रहे हो but खुद की living के लिए कर रहे हो, so that is primitive subsistence agriculture. Let's move to the next. What has been the main dependency of primitive farming? Monsoon, labor, suitability of other environment or technical requirements or something else. So quickly decide what is the main dependency of primitive farming. What is going to be the correct answer here? It is definitely going to be monsoon. India is a monsoon nation. Okay, India receives monsoon rains and that is why it is an agricultural predominant region. Because of monsoons यहाँ पे बहुत ज़्यादा agricultural cultivation किया जाता है and primitive subsistence में क्योंकि हमारे पास new technologies नहीं है, so we rely on the rainfall, we rely on the weather and natural climate. Let's move to question 6. Which type of agriculture is called slash and burn agriculture? Very, very easy question, right everyone? Everybody should get it correct. Is it plantation? Is it intensive? Is it primitive subsistence? Or is it extensive? Everybody go. Quickly tell me what should it be? Quickly. Nobody to give me wrong answers on this. Nobody to give me wrong answers on this. What is it? Slash and burn agriculture. It is primitive subsistence again. Okay. It is also known by other names in different parts of the world, जो कि मैं अभी आपको नहीं बताऊंगी because आने वाले questions में ये है. Is this an environmental friendly method? No. It leads to environmental degradation. Okay. ये जो प्रैक्टिस है ये बिल्कुल भी अच्छी प्रैक्टिस नहीं है. It causes a lot of environmental damage. Let's move to the next question. What are the features of primitive subsistence agriculture? Large amount of labor. When the soil fertility decreases, the farmers shift and clear a fresh patch of land. Is it canals were used or is it use of fertilizers? Time has begun. Easy again. दो चीज़ों में आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हो बट प्लीज़ थिंक लॉजिकली अगेन, यू विल बी एबल टू गेट द आंसर. यहाँ पे बी होगा करेक्ट आंसर क्योंकि हम लोग ओल्ड एग्रीकल्चर की बात कर रहे हैं. यहाँ पे क्या होता था जैसा कि हमने बोला स्लैश एंड बर्न एंड दिस इज द डेफिनेशन ऑफ स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर. व्हाट इज इट? व्हेन द सॉइल फर्टिलिटी डिक्रीजेस. आप एक लैंड में काम कर रहे हो, जब इसकी फर्टिलिटी कम हो जाती है, जब आपको लगता है कि कल्टीवेशन कम हो पाएगी, तो फिर आप उस एरिया को छोड़ करके दूसरे एरिया में मूव कर जाते हो बाय बर्निंग दैट गिवन पैच ऑफ लैंड. ओके, सो दिस इज गोइंग टू बी योर फीचर. कैनल्स, फर्टिलाइजर्स, दिस आर all modern technologies and hence not going to be connected to primitive agriculture. I hope everything is clear. कहीं पे भी doubts आ रहे हो तो please read the chapter all over again and you can also ask in the comment section. Question 8. What is slash and burn agriculture called in many northeast states? Very, very interesting. Jhuming, Milpa, Mazol or Ray. Go guys. Just a 10-second timer, but you should be able to get this answer correct at one go because it is a very, very direct question. Definitely answer is Jhuming. North East में Jhuming कहते हैं, बेवार कहते हैं मध्य प्रदेश वाले रीजन में, मिल्पा कहाँ कहते हैं? मेक्सिको में, रोका इज इन ब्राज़ील,
Ray is in Vietnam. Please find out the other names for slash and burn agriculture in different parts of the world. Okay, this is an important question पूछा जा सकता है. Let's move to 9. Intensive subsistence farming is dash farming. Is it machine based? Is it crop rotation? Is it labor intensive? Or is it soil consistent? Easy question. If you understand the meaning of subsistence and intensive, you will be getting it correct. Nothing much to think, everyone. Quickly, I want the answers. Yes, guys, the correct answer is labor intensive. इंटेंसिव सब्सिस्टेंस बात कर रहे हैं, राइट. अब सब्सिस्टेंस है तो कुछ भी देखो कमर्शियल लेवल पे नहीं होगा. सो दैट इज वाई इट विल नॉट हैव मशीन्स, इट विल नॉट हैव अ लॉट ऑफ क्रॉप रोटेशन और वट एवर इट इज. लेबर इज समथिंग दैट विल बी ग्रेटली यूज्ड एंड ओल्ड टेक्नोलॉजीज. Hence, it will be on a small patch of land as well. यूजुअली क्या है, सब्सिस्टेंस है, इसका मतलब सर्वाइवल के लिए लोग कर रहे हैं. जब सर्वाइवल के लिए आप कुछ करोगे तो विल यू हायर लेबर? नो, द होल फैमिली वुड बी डूइंग इट. दैट इज वाई द लेबर इंटेंसिव क्रॉपिंग इट इज, एंड इट इज डन ऑन स्मॉल पैचेस ऑफ लैंड. Let's move to 10. Why is there enormous pressure on agricultural land? इतना ज़्यादा pressure क्यों है agricultural land पे? Due to the law of inheritance and division of land, overpopulation, small scale farmers are not able to earn livelihood, or farmers of less land holdings are not able to afford the right techniques. Go everybody. Just a few seconds to go. Quickly tell me what should be the correct answer. Why is there enormous pressure on agricultural land? Why? Okay. So it is because of the law of inheritance and division of land. What is it? What is law of inheritance? कि जो हमारे पूर्वज थे, जो हमारे generational डिविजन होती है, वहीं से लैंड पास ऑन होती जाती है. ओके, सो व्हाट हैपेंस इज बहुत ज़्यादा स्मॉल लैंड होल्डिंग्स रहती हैं लोगों के पास, स्पेशली इन रूरल एरियाज, because there is a lot of land division and they do not have a lot of land for themselves. Division of land is also one reason. That is why there is enormous pressure on agricultural land. Let's move to 11. Which type of farming has the use of higher doses of modern inputs? That is HYV seeds, chemical fertilizers, insecticides and pesticides. Primitive subsistence, plantation, extensive or commercial. Everybody quick and easy. Some options तो आप ऐसे ही झट से एलिमिनेट कर सकते हो, राइट बच्चे? ओके, what are you giving the correct answer? It is option D. कमर्शियल में हम लोग प्रॉफिट मेकिंग इनिशिएटिव से करते हैं, इसीलिए हम लोग मॉडर्न टेक्नोलॉजीज को यूज़ करते हैं. All the things that have been mentioned above, HYV, pesticides, insecticides and fertilizers. Alright, let's move to 12. If rice is a commercial crop in Haryana and Punjab, in which state is it a subsistence crop? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा या फिर राजस्थान? Go everybody. सो कुछ क्रॉप्स कहीं के लिए कमर्शियल होते हैं बट और जगह के लिए वो स्टेपल डाइट होते हैं. सो व्हाट इज दैट? राइस इज अ स्टेपल क्रॉप इन विच स्टेट? इट इज़ डेफिनेटली उड़ीसा. स्टेट्स लाइक वेस्ट बंगाल, बिहार, उड़ीसा, यहाँ पे राइस की कंजम्पशन बहुत ज़्यादा है, इसीलिए ये यहाँ के लिए क्या है, यहाँ के लिए ये सर्वाइवल क्रॉप है. इट इज़ नॉट अ कमर्शियल क्रॉप. बट फॉर पंजाब, हरियाणा, जहाँ पे वीट की ज़्यादा डिमांड होती है, what is rice? Rice is just like a commercial crop. Okay, they grow it for commercial purposes. They don't consume it much. Come to 13. What are the characteristics of plantation farming? Multiple cropping, using capital intensive inputs with the help of migrant laborers. Produce is used for various reasons. Crop rotation on the same piece of land. What should it be? Go everybody. Yes. Okay. All right, characteristics of plantation farming. What is plantation farming? Plantation farming is basically the growing of plantation crops. What are they? वो आपको next question में पता चल जाएगा. यहाँ पे capital ज़्यादा यूज़ होती है and migrant laborers बहुत काम करते हैं, जैसे कि हम लोग history में indigo farming के बारे में भी पढ़े थे. Right, so plantation cropping has a lot of migrant laborers, okay, especially in states of Assam, etc.
Let's move to the 14th question, which is related to the 13th question. Name important plantation crops: tea, coffee, rubber, sugarcane, banana, cotton, wheat and rice, or nuts. Everybody, time has begun. Easy question. Did not even waste 5 seconds on this. You can झट से get it correct. Otherwise अच्छे से prepare नहीं कर रहे हो. So please start focusing on SST. Please start focusing. I want everybody to excel. Nobody should be lagging behind. Plantation crops, ये सारे crops है, ठीक है? These are not food crops. क्या ये food crops होते हैं? नहीं. These are plantation crops, okay? They are more of beverage and plantation crops. So 14A is the correct answer. Let's move to 15. Which state is famous for growing tea? Is it Assam? Is it Shillong? Is it Meghalaya? Or is it Sikkim? It is an easy question. Again, you can definitely get it correct. बहुत बार हम लोग इसे general parlance में भी सुनते हैं. It is not necessary that you have to read geography for this. It is Assam, okay? Some places जहाँ पे tea famous है, one is Assam, the other is Darjeeling in India, right? So hilly regions are very good for the growth of tea. आपको पता है कि different crops require different climatic conditions as well as slopes etc. for their cultivation. So crops के लिए, crops such as tea, इनके लिए Assam, Darjeeling are very suitable और यहाँ की tea one of the finest qualities की होती है. If you've not tasted it, you must taste it, guys. Coming to question 16. How many cropping seasons does India have? Is it 4? Is it 2? Is it 5? Or is it 3? Okay, time has begun. Nothing much to think. ये भी basic सा सवाल है. Please do not waste time on this kind of questions. This should be on your fingertips. Okay. It is definitely 3. What are the 3 seasons? One is Kharif crops. One is Rabi and the other is Zaid. खरीफ को हम लोग समर मंथ्स में करते हैं, रबी को हम लोग विंटर मंथ्स में. Zaid is in between खरीफ and Rabi. Okay, so 3 seasons. Let's move to 17. When are Rabi crops harvested? Harvest की बात हो रही है. October, April, December और July. Everyone, time begins. Quickly tell me, quickly. Nothing to think. You can get it correct soon, very soon. Correct answer is definitely April. Okay, ये आप पढ़ लो. अगर आपको exact months नहीं पता है, please go and revise. Move to question 18. Identify the Rabi crop. You have to identify one of the Rabi crops from here. Jowar, rice, soybean or peas. बहुत इजीली पता चल जाएगा क्या खाते हो विंटर्स में. इनमें से कौन सी चीज़ ऐसी है जो स्पेसिफिकली विंटर्स में खाते हो? वेरी इजी. थिंक ऑफ व्हाट इज इन योर रेफ्रिजरेटर. जब समर मंथ्स आने लग जाते हैं, वी कीप फ्रोजन पीज. और मैंने क्या बोला कि रबी क्रॉप्स विंटर की तरफ ग्रो किए जाते हैं. डी इज डेफिनेटली गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर. नेम सम मोर रबी क्रॉप्स इन द कॉमेंट सेक्शन. ज्वार क्या है ये बताओ. राइस इज डेफिनेटली खरीफ. सोयाबीन इज ऑल्सो डेफिनेटली खरीफ. मूव टू द नेक्स्ट. विच स्टेट इज नोन फॉर ग्रोइंग रबी क्रॉप्स? बता दिया था आंसर. मध्य प्रदेश, राजस्थान, उड़ीसा और पंजाब. थोड़ा सा भी रिलेट करोगे तो सोच पाओगे. प्रीवियस क्वेश्चन में बताया था बिफोर 2-3 क्वेश्चंस. विच स्टेट एंड रबी क्रॉप्स, विंटर क्रॉप्स. सो रबी क्रॉप एक बहुत ही फेमस रबी क्रॉप है वीट, एंड पंजाब इज अ लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ वीट. हेंस करेक्ट आंसर इज डी. दिस इज सिंस द टाइम्स ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, जैसा कि ऐसा ऑलरेडी हो रहा है. सो दैट इज वाई दिस इज गोइंग टू बी योर करेक्ट आंसर. Move to question 20. Availability of dash during winter months due to the western temperate cyclones helps in the success of rabi crops. क्या चीज़ ऐसी अवेलेबल करवाते हैं वेस्टर्न टेम्परेट साइक्लोन्स जो कि रबी क्रॉप्स की फसल में हमें मदद करते हैं? Come to the options: monsoons, precipitation, frost or winds. Time begins. Easy. Winter months, western temperate cyclones. What do they bring?
They bring you precipitation guys and that is the correct answer. आपको यहाँ पे ऐसा भी पूछा जा सकता है availability of precipitation during winter months helps in the success of rabi crops. Which cyclones are noticed during this time period? So correct answer is going to be western temperate cyclones. And it can also be asked western temperate cyclones provide precipitation which helps in the success of what kind of crops? तो वो आपका आंसर होगा रबी क्रॉप्स. तो मैंने आपको हर पैटर्न बता दिए. I hope now you can get it correct. Move to question 21. Which states are known for their success in the Green Revolution? Come to the question and options Punjab, UP, Uttarakhand and Gujarat. Again you will know the answer. अगर इस लेक्चर को अच्छे से फॉलो किया है तो भी आप बता दोगे कि क्या है करेक्ट आंसर. Which state are known for their success in Green Revolution? So Green Revolution ने massively पंजाब हरियाणा के farmers को benefit किया था जो कि आज तक भी ये एक agricultural states है, right? They derive most of their income from the farming practices and hence Green Revolution में इनका सबसे ज़्यादा success देखा गया था. Come to 22. When are Kharif crops harvested? September, October, December, January, June, July और April में. प्लीज़ थिंक ऑफ द रबी क्रॉप्स कि हमने कब हार्वेस्ट किया था उनको, उसके अकॉर्डिंग आप ये आंसर मुझे बता सकते हो. व्हाट शुड इट बी? व्हाट शुड इट बी? इट विल डेफिनेटली बी सितंबर अक्टूबर क्योंकि समर मंथ्स में हम लोग क्या करते हैं? समर मंथ्स में हम लोग इन्हें कल्टिवेट करते हैं, ठीक है, ग्रो करते हैं एंड देन उसके बाद हम लोग सितंबर अक्टूबर में ये हार्वेस्ट हो जाते हैं. सो दिस इज द पैटर्न फॉर द खरीफ सीजन्स. Move to question 23 everybody. Name a crop that is grown during the kharif season. Is it barley, is it gram, is it rice or is it jowar? क्रॉप ग्रोन ड्यूरिंग दी खरीफ सीजन. बहुत सारी चीज़ें बोल सकते हो बट पर्टिकुलरली मोस्ट अप्रोप्रिएट क्या होने वाला है? डेफिनेटली राइस. ओके, बार्ले इज़ नॉट, ग्राम इज़ नॉट. आप लोग कमेंट्स में बताओ ये जैद है या रबी है. और जोआर कैन बी क्लासिफाइड इनटू बोथ बट राइस इज कम्प्लीटली अ खरीफ क्रॉप. Move to 24. Name an important wheat growing region. Is it West Bengal? Is it Odisha? Is it Punjab? Or is it Maharashtra? Again very simple. बहुत सारे repetitions हैं. इनमें अगर गलतियाँ कर रहे हो तो फिर बहुत ज़्यादा केयरफुल होना पड़ेगा. Okay? Definitely C is going to be the correct answer. Wheat growing regions कौन से हैं? Where is Punjab? Punjab is towards the north, okay? So this region is famous for wheat and hence C is going to be your correct answer. Let's move to 25th and the last question for today. Name one crop that is grown in the Zaid season. Is it peas? Is it urad? Is it bajra? Or is it maize? It is an easy question. Again, you can definitely get it correct. Please tell me what should it be. प्लीज़ टेल मी ज़ैद सीजन में कौन सा एक ऐसा क्रॉप हम लोग ग्रो करते हैं. करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी बाजरा. नेम सम मोर ज़ैद क्रॉप्स. आई रियली वॉन्ट यू टू स्टडी दी क्रॉपिंग सीजन्स वेरी प्रॉपरली क्योंकि ये बहुत ही important arena है for questions to be asked. Okay, with that we complete this lecture guys. I hope you liked it, you participated. If you have any doubts please reach out in the comment section. Also follow our channel on Facebook, Instagram, YouTube and Twitter. यहाँ पे फॉलो करने से आपको स्टडी रिलेटेड सारी मटेरियल्स मिलेंगी. इसके अलावा बहुत सारी ट्रिविया इन्फॉर्मेशन भी मिलेंगी. सो डू नॉट वेट गाइज, गो एंड फॉलो द पेज एंड आई विल सी यू ऑल विद द नेक्स्ट सेट ऑफ MCQs. Until then, do leave us your feedback in the comments. Hit the like button if you like the videos. Keep motivating, keep studying, keep learning. Take care. Bye bye. See you guys very soon.